studied about homeostasis and the basics of homeostasis, and we know that homeostasis is the maintenance of internal environment and the next thing that we studied was about the skin. Okay, the crucial points was human skin consists of two parts, and of these two parts are epidermis and dermis. Okay, we learned that epidermis is the uppermost part and dermis is the lowest, or you can say the deep part of the skin. A brief diagram can explain. Blood capillaries. Sweat pore. We had a fat layer. The topmost cornified layer. The lower one is granular layer. And beneath it is a malphizian layer. These three makes the epidermis, and the lower ones including the blood vessels, the sweat gland, the hair papilla, you can say the sebaceous glands that produce oil secretions, the adipose fat layer, all they form a dermis. The key point of the previous lecture was the main feature or the main function of our skin is to protect us and is to maintain an internal constant environment. Okay, when it comes to homeostasis, we have learned that homeostasis is maintenance of a constant internal environment. And when we talk about a constant internal environment, we know there are many things that are constantly running consecutively with each other. Okay, the most important thing for our survival is that we need a constant amount of temperature, a reasonable amount of liquids, and a reasonable amount of pH level, and etc. These are all important factors that keeps us alive. And you know what? There are different factors that produce heat in our body. There are so many factors that causes the loss of that heat. When it comes to heat production, there are several metabolic processes. Okay, when I say about metabolic process, it's metabolism. Or metabolism kya tha? Metabolism was actually the sum of all chemical reactions. What is happening inside of our body? It is sum of all chemical reactions that is occurring inside the body. This is known as metabolism. And one example of metabolism is, for example, tissue respiration. Okay, we all know that respiration is breathing. But when it comes to biology, respiration is actually the usage of energy, or you can say the use of oxygen and water and all that and all those things to produce energy in our body. So basically the energy which is produced in our body is because of respiration. So this tissue respiration produces energy, and this is the basic amount of energy, or we can say ATP. This is the
you can say the least amount, the best possible amount of energy that we use. Even if I'm speaking, I'm using this ATP. If I'm walking or I'm thinking, if I'm awake, I'm using this amount of energy to survive. Okay, next thing is heat is distributed. Okay, the statement is heat that is produced is distributed by blood. The concept is simple. We know that the main factory in our body is liver. When it comes to liver, just take an example. We have several organs. There's like liver, kidneys, hearts, and all those things. They are respiring. And when they are respiring, they are producing heats. And when they are producing heats, those heats are being transferred by the blood throughout the body. So far we have studied that the heat which is produced in our body, or you can say the heat which is released by the respiration, is distributed throughout the body by the blood. So blood is the carrier that takes the heat to the whole body. The next thing is our body temperature is about 37 degrees centigrade. And we have to maintain this constant amount of temperature to survive. And you know what? Every part of our body is respiring and every part is releasing heat. So we produce an excessive amount of heat energy. And that heat energy needs to be evaporated, or you can say this energy we have to lose this amount of heat. So to lose this amount of heat, we have different mechanisms. We can lose this heat through skin. And through skin, if I say it is through conduction, convection, etc. It can also be, this heat can also be lost through evaporation. When it comes to evaporation, the sweat that is produced on our skin, when it is evaporated, it produces a lot amount of cooling sensation. The next thing is through urine and feces, actually the waste which is produced by our body. This is the way that we also lose heat and expiration. Okay, let me make it more simple. The heat which is produced in our body, it is more than our requirement. So we have to lose this heat. So how we lose this heat is through skin, and the processes are conduction and convection, the evaporation, and we all know what is evaporation. जब पसीना आता है and then उसके ऊपर जब हवा पड़ेगी, it evaporates, and when it evaporates तो उसे हम कहते हैं latent heat of evaporation, latent heat of vaporization also. उसमें जो उस जगह की हीट है वो वेपर्स उस हीट को लेके मूव कर जाते हैं वहां से. सो जो पीछे जगह है वहां पे कूलिंग सेंसेशन आती है. नेक्स्ट आता है थ्रू यूरिन एंड फीसिस, द वेस्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू आवर बॉडी. वेस्ट हमारा थ्रू स्वेटिंग भी होता है, क्योंकि हम डिफरेंट चीजों को रिलीज कर रहे होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक वेस्ट को बॉडी से निकाल रहे होते हैं. व्हेन इट कम्स टू द यूरिनेशन एंड फीसिस, सो वी आल्सो लूज हीट इन दिस फॉर्म. द नेक्स्ट थिंग इज एक्सपायरेशन. हम सांस ले रहे हैं एंड व्हेन वी एक्सपायर, यूजुअली आपने फील किया होगा जब हमें टेम्परेचर होता है, व्हेन वी हैव हाई फीवर, उस वक्त सांस गर्म होता है बहुत ज्यादा. एंड दिस इज द रीजन कि हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा है, कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना है. और वो किस तरह से, जब हम सांस ले रहे हैं हमें फील होता है, हम अपने सिम्टम्स में बताते हैं कि मामा मुझे गर्म सांस आ रहा है. एंड दिस इज द वन सिम्टम दैट वी हैव अ फीवर और वी हैव अ हाई बॉडी टेम्परेचर. सो दीज आर द वेज थ्रू व्हिच वी लूज बॉडी टेम्परेचर और बॉडी हीट.
Okay, there are several other processes through which we gain heat. And the processes are simple. It can be a hot meal that you have taken. Usually सर्दियों में चाय पी जाती है या कॉफी ली जाती है to maintain our temperature जब हम ठंड फील कर रहे होते हैं. The next thing is through sun's radiation. We all know that कि जब सर्दियां हैं या गर्मियां हैं, जब हम धूप में जाते हैं, we absorb an amount of heat, and the rule is कि heat move करती है from hotter to colder region. तो अगर बाहर टेम्परेचर 42 है, हमारी बॉडी का 37 है, तो हीट 42 से 37 की तरफ आएगी. So in that way we will gain heat. And the next process is hot external temperature. Okay, here are some basic simple terms. Warm-blooded and cold-blooded, and we have studied about them a lot before. So when it comes to warm-blooded, we all know that birds and mammals are warm-blooded. And when it comes to cold-blooded animals, amphibians, reptiles, amphibians like frogs, and reptiles like fishes and crocodiles, and invertebrates. These are all cold-blooded animals. When it comes to differentiation between warm-blooded and cold-blooded animals, so warm-blooded animals are those that can maintain their body temperature, maintain a constant. Maintain a constant body temperature just like us. We are mammals and we are warm-blooded, so we maintain that 37 degrees centigrade of temperature throughout the year. And when it comes to cold-blooded animals, they cannot maintain a constant body temperature. Okay, the most important thing about survival is that we have studied about this. The more adaptive you are to the situations, the more survival rate you have. So we as a mammal and the warm-blooded animals have more rates of survival as compared to the cold-blooded animals. And we also do not hibernate in winter seasons. Now I'm coming to the advantages of having a constant body temperature. Okay, the organisms that have a constant body temperature, they can move around all year. I mean, they don't need to hibernate. They have the capacity to maintain their body temperature by adapting different conditions so that they can move around everywhere. Like just like us, we move to different situations. Like when it is winter, you know, सर्दियों में हम different अपने dressing change कर लेते हैं just to survive, and गर्मियों में हम हमारी dressing से पता चलता है कि season कौन सा चल रहा है. Okay, we can feed all year. We have studied about this कि जो polar bears हैं,
they eat a lot amount of food in summers so that they can hibernate in winters, and so that they use that stored amount of fat in their body. But हम hibernate नहीं करते, so we can feed all year. They can colonize anywhere. You know, warm-blooded animals can move around anywhere and they can adjust anywhere. Just like you can say there's minus 40 degrees centigrade in Antarctica, and humans do survive there. Even penguins survive there. Penguins are birds. Enzymes works at their best. Okay, this concept is very crucial. When it comes to enzymes, we know that enzymes are specific. Enzymes are specific with their temperatures, with their pH, with their so many other values. So when it comes to body temperature, enzymes will work accurate when your body temperature is accurate. Just like अगर आपकी body का temperature 37 है, तो आपकी body का हर process properly चलेगा, because every process requires an enzyme to work. अब when it comes to fever से लोगों की डेथ की वजह इसलिए बनती है because जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, enzymes will work more severely, and at a stage या तो वो डीनेचर हो जाएंगे या इनएक्टिव हो जाएंगे. And this is the reason कि लोगों की हाई टेम्परेचर में डेथ हो जाती है, because enzymes डीनेचर हो जाते हैं. And when it comes to the term डीनेचर means कि वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं. Okay, we have talked a lot about the temperature, कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, मैनेज किया जा रहा है, हम अडेप्ट कर रहे हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट जगह मूव कर रहे हैं, डिफरेंट कंडीशंस को हम अपना रहे हैं जस्ट टू सर्वाइव. हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो इस चीज को सपोर्ट कर रहा होता है? बेसिकली कौन सा ऐसा करेक्टिंग मैकेनिज्म है, कौन सा बॉस है जो कि हर चीज को हर वक्त ओवरलुक देख रहा है और मैनेज कर रहा है? Who controls temperature? Simple. It is in the brain, the hypothalamus. Okay, we have studied about the different parts of brain. We have studied about hypothalamus and pituitary gland and various other things. So when it comes to hypothalamus, it is a heat recognition center. And hypothalamus has two centers, heat center and cold center. We can say कि hypothalamus में दो departments हैं, एक heat का department, एक cold का department, and both are active throughout the year. आप इवन समर्स में भी अगर एसी को 16 पे करके सो जाते हैं, we may feel cold in the morning because हमारे जो cold sensors हैं वो उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं. And this is how our body maintains a constant internal environment. Because देखो, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, nothing will be constant. Okay, so हमारे पास hypothalamus में दो centers हैं, heat and cold center, and this is how hypothalamus manages. अच्छा, manage इस तरह से करेगा. If your temperature is 37, or you can say 98.6 Fahrenheit. और अगर ये हो जाता है 100, लास्ट टाइम एग्जांपल पढ़ी थी कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 100 हो जाता है, या यूजुअली हम कहते हैं भाई 102 बुखार हो गया, वो 102 बुखार हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स उसको रिसीव करेंगे, उस मैसेज को. दैट 102 Fahrenheit फीवर इज अ मैसेज. उस मैसेज को हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे, एंड इट विल बी सेंट टू द सीएनएस, द करेक्टिंग मैकेनिज्म. और वो करेक्टिंग मैकेनिज्म देन जज करेगा भाई टेम्परेचर था 98.6, ये बढ़ गया है, एंड नाउ व्हाट विल हैपन. अच्छा, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है बुखार में, हमारा सांस तेज हो जाता है और हमारी बॉडी से हीट ज्यादा निकल रही होती है. हम उससे प्रॉपरली फील करते हैं कि हमारी बॉडी से हीट निकल रही है. दिस इज द वे वी लूज हीट. जब हमने अभी हीट लॉस का कंटेंट पढ़ा, उसमें हमारा ये था कि हम थ्रू स्किन, थ्रू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन हम हीट लूज करते हैं. एंड वी डू वन सिंपल थिंग, जो पट्टियां लगाई जाती हैं. जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो बच्चों को पट्टियां की जाती है ताकि टेम्परेचर रिड्यूस हो. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जब टेम्परेचर आपका 101 या 102 है, उस वक्त कोई मेडिकेशन भी नहीं दी जाती. एंड द रीजन फॉर दिस इज कि अगर बॉडी के एंजाइम्स इतने वाइग्रसली वर्क कर रहे हैं तो वो मेडिसिन प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं कर सकती.
मेडिसिन ने जाके एंजाइम एक्टिविटी को कंट्रोल करना होता है. सो उस चीज को मेंटेन करने के लिए पहले आपकी बॉडी का टेम्परेचर 100 तक लाया जाता है ताकि वो मेडिसिन प्रॉपर्ली वर्क कर सके. एंड when it comes to cold centers में the thing is very simple. हम जब बहुत ज्यादा ठंड फील करते हैं we start to shiver. And shivering is a simple thermogenesis process कि जिसमें आपके जो छोटे tiny muscles हैं मे बी को आपके कंट्रोल में नहीं है लेकिन वो शिवर करने लगते हैं. And when every time your muscle is moving heat is produced. जब आपकी बॉडी में मसल मूव करता है हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट आपको एक्चुअली बैकअप दे रही होती है सर्वाइव करने के लिए. Okay, last thing, what happens on a hot day and what happens on a cold day? These are some simple but very crucial terms जो usually CAIs में इनके बारे में पूछा जाता है कि what actually happens in a hot day and we can draw a comparison about this. देखो अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो definitely we will sweat. So simple, we will start sweating. और कोल्ड डे में स्वेटिंग नहीं होगी बिकॉज हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम है. हम थर्मोजेनेसिस से शिवरिंग से उस टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं. सो देयर इज नो स्वेटिंग. अब अगर स्वेटिंग हो रही है तो स्वेटिंग मींस कि देयर इज मोर ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर स्किन. सो देयर इज वेसोडाइलेशन. On a hot day there is vasodilation means our vessels dilate so that they receive more amount of blood. And when they receive more amount of blood, देखो अगर आपकी स्किन की तरफ ब्लड का फ्लो ज्यादा है एंड वहां से इवेपोरेशन ज्यादा हो रही है थ्रू स्वेटिंग, तो बेसिकली हमने अभी पढ़ा कि हमारी बॉडी में हीट को कौन मूव कर रहा है, ब्लड. सो जब ब्लड आपकी स्किन तक आएगा वहां से इवेपोरेशन होगी, सो आपकी ब्लड से वो हीट रिमूव की जा रही है. दिस इज द रीजन कि अगर आप गर्मियों में लाइट चली जाती है एकदम से पसीना आना शुरू हो जाता है बिकॉज आप एकदम से हीट अप होने लग जाते हो. एंड हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए टेम्परेचर 37 मेंटेन रखना है सो दैट हम एकदम से रिएक्ट करते हैं. अभी फैन बंद होता है साथ ही स्वेटिंग शुरू हो जाती है. अच्छा, अगर हॉट डे में वेसोडाइलेशन हो रही है तो कोल्ड डे में वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी क्योंकि हीट को मेंटेन करना है. सो ब्लड को अंदर ही रखना है मेन वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर. ओके, अभी जस्ट डिस्कस हुआ कि व्हेन आवर बॉडी टेम्परेचर इज हाई, हमें फीवर हो जाता है, या अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और हम ज्यादा देर बाहर स्पेंड कर लेते हैं, सो व्हाट विल हैपन, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा. दिस इज समर्स. आप इस चीज को खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. यू कैन स्पेंड अबाउट 30 to 50 मिनट्स इन द सन एंड देन आप फील करेंगे कि आपका रेस्पिरेशन रेट भर गया हुआ है. और हमने इसमें क्या पढ़ा था, एक्सपायरेशन. वो जो आप सांस बाहर निकाल रहे हो उससे हीट लॉस हो रहा होता है. जो हमने हीट गेन कर लिया किसी भी वजह से, हम उस हमारा जो कह लो कि ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाता है. एंड जब ब्रीदिंग रेट बढ़ता है इट मींस कि हम अपनी हीट को थ्रू एयर एक्सपायर कर रहे हैं बॉडी से बाहर. और सर्दियों में जब हमें ठंड ज्यादा लग रही होती है, वी मे फील कि हमारे दांत बज रहे होते हैं, वो हम शिवर कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो स्लो हो जाता है. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर हमें फीवर नहीं भी है और हम नॉर्मल डेज में, जिस तरह आजकल समर्स हैं और हमारा टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर 39 to 40 के अराउंड मूव कर रहा है और हमारी एक्टिविटी बढ़ जाती है. एंड यू नो व्हाट, अगर बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और हम बाहर ही में ही जिस तरह मजदूर काम कर रहे होते हैं, एंड
ये एक्सपेरिमेंट है कि अगर हम मजदूर का टेम्परेचर चेक करते हैं तो वो बाहर एक्सटर्नल टेम्परेचर से ज्यादा होता है यूजुअली। वो अगर बाहर 40 है तो उनका भी 40 होगा या 41 होगा, बिकॉज दे आर वर्किंग, उनका मेटाबॉलिक प्रोसेस भी उस तरह से चल रहा है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस क्या है, मतलब लेट्स सपोज कि अगर हम किसी लेबर की बात करते हैं और वो लेबर बाहर वर्कआउट कर रहा है इन 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो व्हाट डू यू थिंक, उसका टेम्परेचर 40 ही रहेगा? अगर उसका टेम्परेचर 40 रहेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। सो उस टेम्परेचर को वापस लाया जाता है टू 37 बाय रिड्यूसिंग इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, आपने यूजुअली नोटिस किया होगा, क्या कहते हैं, खाने के बाद आपको स्टे करना होता है, एक्सरसाइज नहीं करनी, ज्यादा एक्टिविटी नहीं करनी, बिकॉज दैट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। वो डाइजेशन जो है, डाइजेशन के बाद उसने आगे फर्दर ब्रेक डाउन होना है फूड ने। अगर आप उसको प्रॉपर टाइम नहीं देते, अगर आप दूसरी एक्टिविटीज में लग जाते हैं या किसी हैवी एक्टिविटी में लग जाओगे, तो वो ब्लड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से मूव करके आपके मसल्स में चला जाएगा। सो डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगी। सो ऑन हॉट डे, जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या आप किसी बहुत हॉट टेम्परेचर में हो, तो आपका मेटाबॉलिक प्रोसेसेस स्लो हो जाते हैं। वी मे आल्सो फील कि गर्मियों में जब हम दोपहर में स्कूल से घर वापस जाते हैं तो हमें नींद बहुत आ रही होती है, बिकॉज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बहुत डाउन कर दिए जाते हैं। उस वक्त चाहिए होता है कि रेस्ट करनी, और विंटर्स में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बढ़ जाते हैं। और विंटर्स में इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को बढ़ाने के लिए हम कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लेते हैं, कॉफी एंड ड्राई फ्रूट्स, ताकि ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बढ़े, हीट ज्यादा जनरेट हो और हम सर्वाइव कर सकें। एंड दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच।